हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो आम करूले सीपेट एजुकेशन 2024 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन आमर पार्ट 1 सरी जाइए, पार्ट 2 सरी जाइए एवं आज पार्ट 3 डिस्कसन करवा जहाँकि 41 टू 60 क्वेश्चन नंबर 60 पर्यंत 41 रु 60 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेणु भिडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से रिक्वेस्ट ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान पाक शेयर करेंगे। चलो ताले भिडियोटी स्टार्ट करवा। तेणु 41 टू 60 क्वेश्चंस, सो लेट्स नाउ डिस्कस। तेणु 41 क्वेश्चन हो कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स हैज एन एब्सोल्यूट जीरो। ऑप्शन ए नॉमिनल, option B ordinal, option C interval and option D ratio. The correct answer is ratio, option D ratio, option D है कौन ना ratio scale। तार एक्सप्लेनेशन में कौन लिखा ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स रही ना देयर इज एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इक्वल इंटरवल्स रेशियो स्केल तो कौन अच्छे ना इक्वल इंटरवल्स, रेशियो ऑफ मेजरमेंट्स, तापर रही एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। दीज आर दी एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स एंड हाई लेवल ऑफ प्रेसिशन। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल। बुझिपाल पिला माने ये हूँ सब जगह हूँ तार कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो स्केल एगुड़िक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमती नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल से सब कैरेक्टरिस्टिक्स रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 42. Which of the following operations cannot be carried out on the values of a variable measured on an interval scale? Option A addition, option B subtraction, option C division and option D calculation of arithmetic mean. So the correct option is option C. Correct answer is option C division. कहीं ना बिकॉज वी कैनट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इंटरवल स्केल वैल्यूज आज द रिजल्टिंग वैल्यूज वुड बी मीनिंगलेस। जदि आम डिवाइड करवा ताले कौन हम ना रिजल्टिंग वैल्यूर किसी मूल्य रही। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर मेड टेस्ट आर ऑप्शन ए क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, ऑप्शन सी ऑन साइंटिफिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। कहीं ना तार एक्सप्लेनेशन हो कौन ना टीचर मेड टेस्ट आर ऑफन क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट बिकॉज दे आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया रादर देन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू वन अनदर। जितेबाला आम कंपेयर कर स्टूडेंट को वन अनदर से कौन होता है नॉर्म रिफरेंस टेस्ट होता है। तेणु टीचर मेड टेस्ट कौन है पिलार स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कर इंडिविजुअली ताकू कह जाए क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। एटा पिला माने तो अति सहज क्वेश्चन, एटा तुम मन रखिथिबो ठीक करथिबो आंसर भाबुची। ऑप्शन ए बी एस ब्लूम, ऑप्शन बी आसुबेल, ऑप्शन सी जीन पियाजे एंड ऑप्शन डी लेव हाइगोट्स्काई। तेणु द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी एस ब्लूम बा बेंजामिन एस ब्लूम। बी एस ब्लूम कौन करते ना टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बाहर करते। आसुबेल कौन बाहर करते ना मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। लेव हाइगोट्स्काई कौन करते ना कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड जीन पियाजे कौन करते ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा हायरार्किकल लर्निंग। एटा इंपोर्टेंट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तेणु युवा भल भाव कौन मन रखियो पिला माने। तापर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assesses the consistency of scores across different administrations of the same test? Option A inter-rater reliability, option B parallel forms reliability, option C test retest reliability and option D inter-consistency reliability. The correct answer is option C test retest reliability. Because test retest reliability is a statistical method that measures how consistent test results are over time. It is a common reliability method used in research studies to assess the reproducibility of results from healthy controls. Then the next question is objectivity of a test is primarily concerned with option A
accuracy of test results. Option B, fairness of the testing process. Option C, absence of scorers bias and subjectivity. And option D is difficulty level of the test. The correct answer is option A, accuracy of test results. ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର କରିଥାଏ ନା ଆକ୍ୟୁରେସିରେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦେୟାର ଆର୍ 4 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ: ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ରିଲାଏବିଲିଟି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜେବିଲିଟି। ସୋ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ବୋଥ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ସ। Objectivity of a measuring instrument means the degree to which different persons scoring the answer script arrives at the same result। ता माने कौन जी जेते प्रकार देखिले मध्य जेते जन से टेस्ट को देखिले समान आंसर ही देई थांती बा समान रिजल्ट ही देई थांती ताको कुआ जाय ऑब्जेक्टिविटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज blueprint is prepared at the dash stage of a test construction। option A, planning, option B, preparing, option C, trying out, and option D, evaluation। The correct answer is option A, planning। There are 4 stages or steps or principles of a test construction such as planning, preparing, try out, and evaluating। At the planning stage of a preparing test specifications, preparation of a table of a specification or a blueprint is prepared। ये blueprint को कौन कहा जाए ना table of specification बोली कहा जाए। Blueprint is a 3-dimensional chart showing list of instructional objectives, content areas, and types of items in its dimensions। It includes 4 major steps like determining the weightage to different instructional objectives, determining the weightage to different content areas, determining the weightage to item types to be included, and preparation of the table of specification। 4टा स्टेप तार रही कौन कौन ना प्रथम अच्छे डिटरमाइनिंग द वेटेज टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आमर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रही नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन को ऑब्जेक्ट को केते वेटेज दिया जाव प्रथम स्टेप हो सेटा। सेकेंड स्टेप हो कौन ना टू डिफरेंट कंटेंट एरियाज कहले कौन कौ कंटेंट जी रही से कंटेंट को कौन कौन वेटेज दिया जाव केते लेखा वेटेज दिया जाव। तापर थर्ड होचे आइटम टाइप्स टू बी इनक्लूडेड को आइटम को केते वेटेज दिया जाव जेमती शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स इत्यादि जो क्वेश्चन सब रही को टाइप क्वेश्चन के केते वेटेज दिया जाव। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। गोटे टेबल रे सब जाक रिप्रेजेंट करा जाव। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 48. Which type of validity refers to the degree to which test scores correlate with the scores of an established measure of the same construct? Option A, content validity, option B, concurrent validity, option C, predictive validity, and option D, face validity। Here the correct answer is option B, concurrent validity, because concurrent validity refers to the degree in which the scores on a measurement are related to other scores on other measurements that have already been established as valid। In other words, when we are interested in estimating present status or performance and thus in the relationship between 2 measures taken concurrently, the procedure is called as concurrent validation। जेतेबेले दीटा टेस्ट भितरे दीटा उपाय बा दीटा टेस्ट मध्य जेतेबेले रिलेशनशिप बाहर करा जाए सेतेबेले कहा जाए concurrent validation। The next question is question number 49. The research conducted by practitioners to improve their craft is called option A, fundamental research, option B, applied research, option C, historical research, and option D, action research। Here the correct answer is option D, action research। Action research focuses on solving specific classroom or school problems, improving practice, and helping to make decisions at a local site। This encourages the teachers or practitioners to examine the dynamics of their classroom and challenge existing practices। On the basis of purpose, educational research is classified as basic or fundamental and applied research, evaluation research, research and development, and action research। तेणु ये जो रिसर्च सब दिगला फंडामेंटल, अप्लाइड, हिस्टोरिकल एंड एक्शन रिसर्च। हिस्टोरिकल नुहे एक्शन रिसर्च, दीज आर दी कैटेगरीज अंडर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्पज। रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू following types: basic or fundamental or applied research, evaluation research, research and development, and action research।
The next question is question number 50. In an experimental research, the variable that is manipulated to find its effects on another variable is known as option A dependent variable, option B independent variable, option C intervening variable, and option D none of these. The correct answer is option B independent variable. According to J.W. West and J.B. Khan, the independent variables are the conditions or characteristics that are experimenter or researcher manipulates or controls in his or her attempt to ascertain their relationship to observed phenomena. According to J.W. West and J.B. Khan, the dependent variables are conditions or characteristics that appear, disappear, or change as the experimenter introduces, removes, or changes independent variables. The next question is, the universe from which a representative sample has been drawn for the purpose of a research study is also known as option A variable, option B sample, option C larger sample, and option D population. The correct answer is option D population. What is a population? A population is any group of individuals that have one or more characteristics in common that are of interest to the researcher. J.W. West and J.B. Khan. The entire phenomena about which we are interested to know may be termed as a population. It may be the individuals, institutions, objects or a particular area. ତେଣୁ ପପୁଲେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠିକି ଦ ଲାର୍ଜର ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ଏନି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ତା'ର କ'ଣ କମନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପପୁଲେସନ୍। ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା ପପୁଲେସନ୍ ସେଇଆ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଭାତ ବସେଇଛେ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ସାରା ହାଣ୍ଡିର ଭାତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପପୁଲେସନ୍। ଯେତେକ ଯାକ ଭାତ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଭାତ ଆମେ ନେଇ ଦେଖୁ ଯେ ଭାତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ପୁଲ୍। ହାଣ୍ଡି ସାରାର ଭାତ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍। ଯେଉଁ ଭାତ 2-3ଟା ଆମେ ଚିପିକି ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଭାତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ବା ନମୁନା। The next question is, in APA style, APA stands for option A academic parameters associate, option B academic proposals association, option C American psychological association, and option D approved presentation for academics. ତେଣୁ correct option is here option C. The correct answer is option C American Psychological Association. APA stands for American Psychological Association. The next question is, which of the following is a plagiarism check software? Option A Grammarly, option B PPT, option C Hot Potatoes, option D Microsoft Word. Here the correct answer is option A Grammarly. Grammarly is the correct plagiarism check software. Plagiarism in research is the act of using someone else's work without giving them proper credit, such as using their words, ideas or information without citing the source correctly. It means presenting work or ideas from another source as your own with or without consent of the original author by incorporating it into your work without full acknowledgement. Plagiarism कहले माने कौन जे निजे कहार गोटे लेखा कहार गोटे जिनसकू आमे कॉपी करके निजे करुचे बोली कहले कौन हम ना सेठी दैट इज प्लाजियारिज्म बोली कहा जाता है। प्लाजियारिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर आर ग्रामरली. इट इज प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन प्लाजियारिज्म चेकर. सेकेंड इज राइटर, थर्ड इज व्हाइट स्मोक, फोर्थ इज क्यू टेक्स्ट, फिफ्थ इज कॉपी लिक्स, सिक्स प्लाजियारिज्म चेक, next is copyscape, next is duplicator, plug scan, and unicheck. तापर the next question is, the practice of gathering data for a research study by asking people questions is called option A case study, option B survey, option C historical research, option D observation. Here the correct answer is survey. Survey research is a research method involving the use of standardized questionnaires or interviews to collect data about people and their preferences, thoughts and behaviors in a systematic manner. That is survey research. The next question is,
Find out the mean from the following on group data. The scores are 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 and 83. Here the solution is, here the correct answer is option C, 77. The formula for calculating mean from one group data is m is equal to sigma x by n, where m is equal to arithmetic mean or the mean, sigma is equal to sum total of এটা কুହାଯାଏ କ'ଣ ନା sigma, x is equal to the scores and n is equal to total number of scores. Thus ex is equal to sigma x is equal to এই जो आमे कहूचे sigma x is equal to केते होची ना एटा सब मिसै दबा 71 plus 72 plus 73 plus 74 plus 81 plus 82 plus 83 एटा सब आमे मिसै देले तार मिश्रण फल होची बा एडिशन होची केते ना 1001. नेक्स्ट n is equal to 13 केमी 13 ना गणी दबा आमे सब जगह गणी देले केतेटा स्कोर एठी रहिची ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. तेणु n here n is 13. So mean is equal to sigma x by n is equal to 1001 by 13 is equal to 77. So the correct option here is option C, 77. Then the next question is, which of the following set of ungrouped scores has the highest value of a standard deviation? Option A 8 9 10 11 12, option B 6 8 10 12 14, option C 4 7 10 13 16 and option D 2 6 10 14 18. तेणु एगुड़ाक पिला माने बाहर करिया पई पड़िबो, आकु सॉल्व करिया पई पड़िबो. तेणु करेक्ट आंसर होची यार के ना ऑप्शन डी. ऑप्शन डी होची हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. केमिति ना स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करिवार फॉर्मूला होची कोन, एटा होची अनग्रुप डाटा जेहेतु हमको एमती स्कोर दिया जाइछि, तेणु आकु आमे अनग्रुप डाटा बोली कहि थाउ. ए अनग्रुप डाटार स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करिवार फॉर्मूला हैला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन रो रूट ओवर, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन रो रूट ओवर. तेणु कौन जानिबा ना सिग्मा कहले कौन, सॉरी एटा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा कहले सम टोटल ऑफ, एक्स कहले डेविएशन ऑफ द स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. बुझेले ताले आमर ऑप्शन ए देछि 8 9 10, ए जो देछि ऑप्शन ए 8 9 10 11 12. तेणु तार स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बाहरला केते, वैल्यू बाहरला केते ना केमिति बाहर देख पिला माने प्रथम कौन करना एम तार मीन बाहर करिया पे पड़िबो. मीन हैला कौन ना अनग्रुप डाटा सिग्मा एक्स बाय एन. तेणु मीन हैला केते ना 10 10 बाहरला. तेणु एक्स कहले कौन, ए जो स्मॉल एक्स कहले कौन ना एक्स माइनस एम, कहले प्रत्येक स्कोर रु एम माइनस हम. तेणु प्रथम देछि कौन 8 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 एंड 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2. तापर एक्स स्क्वायर बाहर करिया पे पड़ो. एक्स स्क्वायर गले -2 इंटू -2 इक्वल टू 4, 1 इंटू 1 एटा पिला माने टिके भूल हो जाय, एटा हो 1 1 स्क्वायर 1, एटा हो 1. 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू सॉरी एटा होचे एक्स स्क्वायर बाहर करछे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. एटा पिला माने एटा 1 हो, 1 स्क्वायर 1 हो. तेणु 2 रो स्क्वायर है -2 रहा 4, 1 रहा 1, 0 तो 0 हम, 1 स्क्वायर 1, 2 रो स्क्वायर 4. तेणु तापर कौन बाहर करबा ना एई गुड़िकर मिश्रण फल बाहर करबा. सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 केते सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11. ताले स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करिया पे हेले कोन ना फार्मूला होचे सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन. सिग्मा एक्स स्क्वायर होचे केते ना 11 बाय 5, 11 बाय 5 रो रूट ओवर इज इक्वल टू 2.2 रो रूट ओवर इज इक्वल टू 1.48. बुझि परला. तेनु ऑप्शन बी होचे केते, ऑप्शन बी सेमति बाहर कले तार वैल्यू होचे केते ना 2.82. ऑप्शन सी रो सेमति बाहर कले तार वैल्यू होचे केते 4.24, तार होचे 4.24 एंड ऑप्शन डी रो होचे केते ना 5.656 बा 5.6
6 तेणु हाईएस्ट कहार रहा ना एमती बाहर कले ही जापर जे हाईएस्ट कहार रहा तेणु हाईएस्ट रोचे ऑप्शन डी 2 6 10 14 एंड 18 5.65। नेक्स्ट क्वेश्चन होची फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप्ड स्कोर्स। अनग्रुप डाटार मीडियन बाहर करवा केमती देछि ना स्कोर गुड़िक देछि 2 5 6 7 10 11 20 35 57 एंड 88। तेणु ऑप्शन ए देछि यार 10, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 10.6 एंड ऑप्शन डी 11। तेणु अनग्रुप डाटार मीडियन बाहर कर फॉर्मूला होछि कोन ना n + 1 बाय टूथ स्कोर। हियर n = 10 केमिति ना एटा कोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेणु जेहेतु n = 10 एटी कौन करने पड़े फास्ट स्टेप है ना अरेंज द स्कोर्स इनटू एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहले सानू बड़ क्रम बड़ू सान क्रम प्रथम स्कोर गुड़ सजेब तापर मीडियन = n + 1 बाय टूथ स्कोर ताले एठी n है 10 बा 10 + 1 बाय 2 = 11 बाय टू स्कोर 11 बाय 2 है 5.5 मीन्स फिफ्थ स्कोर एंड सिक्स स्कोर बाय 2। हियर फिफ्थ स्कोर = 10 एंड सिक्स स्कोर केते ना 11 सिक्स स्कोर = 11 तेणु 10 + 11 बाय 2 = 21 बाय 2 = 10.5। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10.5। तब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एरिया बिटवीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड +1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ऑप्शन ए 99.5%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 72.26% एंड ऑप्शन डी 68.26%। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 68.26%। तेणु तार -1 स्टैंडर्ड डेविएशन रु +1 स्टैंडर्ड डेविएशन भितर केते रही ना 68.26%, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन रु +2 स्टैंडर्ड डेविएशन भितर रोचे 95.44%, माइनस और +3 स्टैंडर्ड डेविएशन भितर रोचे 99.75%। तापर 59 नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 पिला माने ए एनपीसी कर्व टाको बा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व टाको पूरा मने रखिथिबो एटा सब बेले आसे परीक्षा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मोड एंड डी ऑप्शन डी होची रेंज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी मीडियन। देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सच एज द मीन, द मीडियन एंड द मोड। द मीन कहले कौन बुझाए क्या बुझाए ना इट इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। It is defined as the quotient obtained by dividing the total number of values of a variable by the total number of their observations or items. Systematically, it is written as m. Symbolically, it is written as m. पिलामाने एबे मीन मीडियन मोड तुम थर्ड सेमिस्टर पिलामानकर पढ़ा जाउची सेथुर मध्य वीडियो को मोर चैनल को जाइए वीडियो सर्च कले तुम कोर 7 पेपर सर्च कले तुम मैंने मीन मीडियन मोड विषय भल भाव में जापर केमी कैलकुलेसन क्या जाए। तापर नेक्स्ट हूँ कौन दी मीडियन इट इज द मिडिल वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन बिलो एंड एबव व्हिच लाइज वैल्यूज विथ इक्वल टोटल फ्रिक्वेंसीज और प्रोबेबिलिटी। इट डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हाफ्स। मीडियन कौन करता है ना गोटे डिस्ट्रीब्यूशन को समान दुई भाग में विभक्त करता है 50% एबव रे थांती एवं 50% बिलो रे थांती स्कोर्स गुड़िक। तापर दी मोड इज द सिंबलिकली मीडियन इज रिटन एज MDN बुझिपाल पिला माने MDN बोली सिंबलिकली लिखा जाए। मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्कोर और इवेंट इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एज एन एवरेज इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ ए सीरीज व्हिच ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स विथ द एग्जिस्टिंग आइटम। सिंबलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज MO। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज T scores are normalized standard scores converted into distribution with a mean of 50 and a standard deviation of a dash. Option A is 2, option B 5, option C 10 and option D 20. Here the correct answer is option C 10. T score refers to any set of normally distributed standard scores that has a mean of 50 and standard deviation of 10. The formula used to compute T score is T score is equal to 50 plus 10Z. A Z score has a mean of 0 and standard deviation of 1.
In order to obtain z value, we divide the deviation about the mean by the standard deviation. The formula for computing z value is z is equal to x minus m by standard deviation by small x by standard deviation, where x is equal to raw score, mean m is equal to mean, standard deviation is equal to standard deviation of the raw score, and x is equal to the deviation of the mean from the score. So this is all about your CPET question from 41 to 60, and in your next video I will I will analyze the next 20 questions, that is 61 to 80. 61 क्वेश्चन रु 80 पर्यंत क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो रे मु डिस्कशन करी। तेणु चैनल सहित जोगाजोग रे रही थांतु एवं पिला मानन पाखु सब्सक्राइब करंतु।